Now the next question 4.11, and the question is, in a chamber a uniform magnetic field of 6.5 Gauss is the CGS unit of magnetic field, and 1 Gauss is equal 10⁻⁴ Tesla, is maintained. So student, given is magnetic field B, given data B, magnetic field is given, which is 6.5 Gauss, or you can write 6.5 into 10⁻⁴ Tesla, this one. An electron is shot into the field with a speed, electron is moving with a speed 4.8 into 10⁻⁶ meter per second, normal to the field. Student, the important point is velocity is perpendicular to the magnetic field, normal to the field. Explain why the path of the electron is circular. We have to prove that the path is circular. This is a concept, simple concept. Also, determine the radius of the circular orbit. Radius of the circular orbit is to find. Radius of the circular orbit क्या होगी? Also there is given charge on electron, as we know 1.6 into 10⁻⁹ coulomb. This is given. Also mass of electron is given, and you know mass of electron is 9.1 into 10⁻31 kilogram. Now, so स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है जो पाथ है वो सर्कुलर क्यों होगा. सो सॉल्यूशन फर्स्ट इज जस्ट द कंसेप्चुअल पार्ट. तो हमें ये बताना है जो जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन, वेदर इट इज प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, एनी चार्ज पार्टिकल, वो एंटर करेगा. अगर वो एंटर करेगा वो सर्कुलर पाथ लेगा. अभी जस्ट इसका एक पाथ बना रहे हैं. ये इस साइड भी हो सकता था, ये ऊपर भी हो सकता था, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. बट अभी हम सिंपली ये बता रहे हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड पर नॉर्मली एंटर करेगा तो वो एक सर्कुलर पाथ लेगा. बट व्हाई? हियर इज अ कंसेप्ट. वी नो the force on a charged particle due to magnetic field is Fe, which is q v b sin theta. Okay, now whenever the body moves, it do some work. If here the charged particle is moving or entering the magnetic field 90 degree, here theta is 90 degree, and when theta is 90 degree, what will be the work done? Work done is force into displacement. You can say force into displacement, F dot dx vector F ds cos theta. If the angle is 90 degree, cos 90 which is 0. आप भी कहेंगे यहाँ पर जो एंगल दिया है ये है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में, यहाँ है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में. एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट जिधर होगी, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, और जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर लगेगा. इट मींस इन दोनों के बीच में भी जो डायरेक्शन आने वाली है वो भी परपेंडिकुलर आने वाली है, तो एंगल इन दोनों के बीच में 90 डिग्री ही रहेगा. सो स्टूडेंट, किसी बॉडी पे फोर्स भी लग रहा है और वर्क डन 0 आ रहा है, ऐसा किस केस में होगा? ऐसा होता है जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कल में मूव करता है. तो यहाँ से प्रूव होता है द पाथ विल बी सर्कुलर. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो सिंपली आप कहोगे हियर द वर्क डन इज 0. सिंस द वर्क डन 0, सो द पाथ ऑफ द पार्टिकल which is moving in the magnetic field will be circular path. So this is the concept. But we have to calculate the magnetic radius. We have to calculate the radius of that circular path. You know, when the charge particle moves in a circular path, it is
because of centripetal force. Here the magnetic force converted into the centripetal force, that is magnetic force, which is QVB sine 90, angle is given, and the centripetal force, which is mv square upon r. Sine 90 is 1, you can write it is QVB, because magnetic force converted into the centripetal force, therefore you can write QVB, which is mv square by r. V से V cancel हो रहा है, or you can write R, which is mv divided by QB. This is the formula for the radius. Everything is given. M is the mass of the electron is given, velocity of the electron is given, charge on electron is given, and magnetic field is given. Putting the value, you can calculate the radius. So we will put the values in the formula derived. R, which is M, 9.1 into 10 raised to power minus 31 kilogram. V, 4.8 into 10 raised to power 6 divided by 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb, and B is 6.5 into 10 raised to power minus 4. And when we will solve it, we will get the answer. And what will be your answer? The answer will be 4.2 into 10 raised to power minus 2. 4.2 10 to the power minus 2 meter. So you will calculate it with the help of calculator with the simple calculations. 4.2 10 to the power minus 2 meter. 10 to the power minus 2 meter is 1 centimeter. You can write R will be 4.2 centimeter. This is the formula. Okay, we have to calculate the radius in which the charge particle will move, and the answer is 4.2 centimeter, and this is 4.11.